You come to the school every day, you spend 6 hours here, you study so many things, but your personalities do not change. You remain the same, whatever you are. If you are a responsible person, you remain responsible, you don't change. Or you may change for the worse, but you still remain responsible, okay? Or if you are an irresponsible person, you remain irresponsible, you never change. Unless some outside influence, some events take place in your life. मसलन मैंने देखा कि कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल बेपरवाही की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उन्हें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो बेपरवाही की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, इतना उन्हें कोई ख़ास ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं होता, डेली बेसिस पे ज़िंदा रह रहे होते हैं। सो प्लीज़ पे अटेंशन, यू कैन डू दिस टास्क लेटर ऑन। अच्छा, उन्हें ज़िंदगी से इतना कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होता, वो अपनी ज़िंदगी जो है वो बस सुबह उठते हैं, स्कूल चले जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, और जो भी अपने काम काज हैं वो कर रहे होते हैं, और अचानक उनकी ज़िंदगी में कोई हादसा वकूअ पज़ीर हो जाता है, कोई सानहा हो जाता है, कोई बड़ा वाक़या हो जाता है। लेट्स से किसी के फादर की डेथ हो जाती है, किसी की मदर की डेथ हो जाती है, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो उसके बाद वो अचानक बदल जाते हैं, अचानक उनके सर पे टोपी आ जाती है, तस्बीह आ जाती है हाथ में, अल्लाह अल्लाह करने लगते हैं, नमाज़ें पढ़ने लग जाते हैं, और 6 महीने तक, 4 महीने तक उनकी ये रूटीन रहती है, और 6 महीने के बाद वो दोबारा अपनी पुरानी हालत पर वापस आना शुरू हो जाते हैं, जिसका मतलब होता है बेपरवाही और बेफिक्री। तो ये क्या है? ये इंसान, इसको अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक शख्स है, उसके इर्द गिर्द अंधेरा है, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा, उसको कुछ पता नहीं है, अचानक बिजली कड़कती है। समझते हो ना, जब बिजली चमकती है तो क्या होता है, और वो उसके इर्द गिर्द की चीज़ों को रोशन कर देती है, मतलब उसको अचानक नज़र आता है। ही स्टार्ट्स वॉकिंग, और फिर अंधेरा हो जाता है, तो फिर खड़े का खड़ा रह जाता है। यानी ये बिजली चमकना क्या हुआ? कोई हादसा हुआ, कुछ हुआ। तो और आगे उस आयत के एंड में लिखा हुआ है, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, नहीं समझते। सो the true job of an educational institution should be to spread light, to give light to the people. Which people? To their pupils, the students. What light is that? The light of wisdom. Why is it required? Because this is what gets you through your life. Wisdom gets you through your life. I'm not just ridiculing the importance of this formal education at all. I'm not saying that this is completely rubbish. I'm not saying that. It is required, yes. It gives you a lot of understanding about certain subjects or certain topics or certain areas of concern, like mathematics, maybe physics or chemistry, to some extent biology, and history and Islamic studies and the languages. So it gives you something, but this is not what gets you through life. Life is spent through a character, a personality that you carry within yourself. So if you have a personality which has grown like a shrub aside a street, सड़क के किनारे उगी हुई खुद रो झाड़ी की मानिंद अगर आपका किरदार बन गया है, आपको कोई पता नहीं है, आप अंधेपन का शिकार हैं, बहरेपन का शिकार हैं, सही और गलत की तमीज़ आपके अंदर से ख़त्म हो चुकी हुई है, आप अंधाधुंध सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं, आपको कुछ नज़र नहीं आता, आपके ज़हन में जो चीज़ें पसंद हैं, आपको ये नहीं मालूम कि
ये पसंद जो है मेरे हक में है, मेरे 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 खिलाफ है, यानी इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं जिनका किरदार बनाने से ताल्लुक़ होता है। तो नतीजा ये है कि आपकी ज़िंदगी को बदलेंगे सिर्फ हादसात, और वो भी आर्जी तौर पर, टेम्परेरीली। योर लाइफ विल चेंज ओनली बिकॉज ऑफ some interventions, external interventions, which would not be part of your plans, जो आपके plans का हिस्सा तो नहीं हो, but they would come to surprise you, they would come to shock you, they would come to jolt you, and you would get shocked, you would get jolted, but that would be temporarily. You will not benefit from those jolts and shocks. Temporary benefits. So what should be done then? So the comparison was, on one side there are schools, institutions, universities, research institutions which are dwelling upon continuous pouring of knowledge into the heads of their students, but they are not bothered about what characters are they developing. Factually speaking, doctors should be very kind people. Shouldn't they be? Why should they be kind? Because they treat human beings. They work for the well-being of human beings. But are the doctors kind people? Why not? At least in our country, most of them. There are kind doctors also. I'm not, see, whenever I draw such comparisons, I do not fall just on one side. I am talking in terms of ratios. So the ratios of unkind people, unkind doctors, is more in our country as compared to the kind doctors. Why is that? Because no one has trained them to be kind, because no one has helped them develop their characters. They have become doctors, they have studied, they have read books, they have been trained in that profession, but they have not been trained to have good characters. And this is the reason that there was a survey done in India, I think, about domestic violence. You know what is domestic violence? Domestic violence is done at home when people beat each other, like a husband beating a wife, or like a father beating a daughter, or a grandfather beating a granddaughter, or something like that. Mostly the violence at home is done by males on the females, according to the data. In India, there was a survey done, and it was found out that the most cases that were reported of the violence at home, the perpetrators, the ones who committed the violence, were educated men. And they were living in cities, not rural areas. The violence at home in rural areas was less in that survey as compared to the urban areas, which are cities. यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो ख़वातीन पर तशद्दुद करने वाले जो मर्द थे, उनमें उनकी अक्सरियत जो है वो पढ़े लिखे लोगों की थी, और उनमें अक्सरियत जो है वो शहरों में रहने वालों की थी बनिस्बत गांव में रहने वालों के. Why is that so? Because the education which they received from their institutions did not help them become good at character. There was no character development. So you see, education तो थी उनके पास, तालीम तो है, लेकिन उसके बावजूद अभी जैसे हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं that patients are treated brutally, without sensitivity, in a very insensitive way. Private hospitals में चले जाएं या government hospitals में चले जाएं, doctors, they do not treat the patients kindly and with love and care.
The educators, the teachers, they don't treat their children kindly with love and care. Same goes to the parents and everyone else. So what is missing? What is missing? Abdullah Rafiq? Yes, character building is missing. That is why this all is happening. So इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में ये आता है कि आप में से जो भी कामयाब होना चाहता है ज़िंदगी में, उसको क्या करने की ज़रूरत है? उसको अपने किरदार को बनाने की ज़रूरत है, उसको अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करना है। अगर उसने कैरेक्टर बिल्डिंग कर ली अपनी, तो ये पढ़ाई पीछे रह जाएगी, ये पढ़ाई की वैल्यू कम हो जाएगी, इसका इतना इफेक्ट नहीं होगा। Why? That we will discuss, and how that we will discuss in the coming few days, in which we will study what are the key elements of developing a character. First of all, let me list them for you. The key elements for developing a good character are respect, responsibility, honesty, kindness, courage, integrity, gratitude, and there are many other things we may come across during our discussions. But these are the key elements. You know, there can be perseverance also, there can be self-control, optimism, resilience, teamwork, citizenship. So there can be many other aspects also of a good character, of character development and character growth. But I have found out some key aspects. I have shortened it down so that it becomes easier for you to focus. So you see, this is not about giving you home assignments or asking you to take notes, or this is not academics. This is something, if you understand, you'll apply it. ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है। मैं आपको सिर्फ किताबी बातें नहीं करना चाह रहा। आप में से कुछ लोगों को जमाइयाँ आ रही हैं, उसकी वजह ये है कि आप लोगों को, जिनको जमाइयाँ आ रही हैं या जिनको नींद आ रही है या जिनका ज़हन इधर उधर भटक रहा है, उसकी वजह ये है कि वो अभी तक बेचारे इतने मैच्योर ही नहीं हैं कि वो ये समझ सके कि उनकी अपनी ज़िंदगी का मसला है, उनको अपनी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए क्या चाहिए। अब इसके लिए पहले तो ये मानना पड़ेगा ना कि ज़िंदगी ठीक है या नहीं ठीक है। तो वो तो ये समझते ही नहीं है कि उनकी ज़िंदगी ठीक है या नहीं ठीक, वो तो बस जा रहे हैं अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सो दोज हु डू नॉट हैव दैट एनलाइटनमेंट अबाउट देयर ओन सेल्व्स, वो तो नहीं सीखेंगे। वो तो तब ही सीखेंगे जब जब झटके शटके लगेंगे, वो भी अगर कोई लगे तो लगे, तब शायद सीख लें तो सीख लें, वो नहीं सीखेंगे। लेकिन कुछ लोग आप में से ऐसे ज़रूर होंगे कि जिनको अल्लाह ताला ने ये समझ दे दी होगी कि झटके लगने से पहले सीख लेना अक्लमंदी है, और पहले सीख लेने का मतलब ही यही है कि दूसरों से आगे निकल जाएंगे। तो कल को मिसाल देता हूं आपको छोटी सी। में आई स्टडीड some 10 to 15 biographies of the most successful people of the world, and I found out there was one character trait, not academics, not qualification, not money, nothing else. There was one character trait which I found in them was common. यानी मैंने 10 से 15 जो दुनिया के मशहूर तरीन लोग थे उनकी मैंने बायोग्राफीज़ को स्टडी किया था। उसमें आई कोका था, उसमें स्टीवी जॉब्स है, बेल कंपनी के कुछ सीईओज थे पुराने, दिस बिल गेट्स ऑल्सो, एंड अ फ्यू हिस्टोरिकल फिगर्स ऑल्सो, इंक्लूडिंग आवर डियर प्रॉफिट हु इज़ एट द टॉप, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. So I studied some personalities. I studied about them, whatever books I could get. And I found out that मुझे पता चला कि एक ऐसी क्वालिटी है
जो उन सब में थी. There was one quality which was in all these successful people. वो क्या थी? उनके मैट्रिक में नंबर ज़्यादा थे, या ओ लेवल में ए स्टैरिक्स आ गए थे, या ए लेवल के में उन्होंने डिस्टिंक्शंस ले ली थी, या उन्होंने जो है वो अपना जो बीएस है वो एरोडायनेमिक्स में कर लिया था. नो, मोस्ट ऑफ देम वर इवन कॉलेज ड्रॉप आउट्स. यानी उनमें से ज्यादातर वो थे जिनको कॉलेज से निकाल दिया था. इतने नालायक थे पढ़ाई में वो, लेकिन वो उन्होंने दुनिया की तारीख को इंपैक्ट किया. दे बिकेम द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल बिकॉज ऑफ वन कैरेक्टर ट्रेट. डू यू नो विच वन दैट वुड बी? ह्यूमिलिटी, आजिजी, हम्बलनेस. इट इज द ऑपोजिट ऑफ प्राइड. अकड़ना नहीं होता, तकब्बुर, अकड़, ओ छाड़ो, ओ मैं वेख लांगा. They were humble people. They had humility. So one character trait common in all the successful people. And then there are many others which are, overlaying, or sometimes they are more in one and less in the other. But one thing I found out, that they all had something about their character. Because, when you talk to people, what are you? You are a character talking to people. The words that come out of your mouth, the actions that you do, जो आप कर रहे होते हैं, जो आप बोल रहे होते हैं, जो आप सोच रहे होते हैं, वो आपके किरदार में से ही निकलता है ना. जो जिस तरह का आप किरदार होते हैं वैसे आप काम करते हैं. तो डिसीजन मेकिंग भी फिर वैसी ही होती है, फैसले भी वैसे ही करते हैं आप. तो जैसा किरदार होगा वैसे ही फैसले होंगे. फैसलों की बुनियाद पर मुस्तकबिल की शक्ल बनती है. आज जो फैसला मैं करूंगा उससे मेरा मुस्तकबिल वजूद में आएगा, ऑब्वियसली. तो अगर मेरे किरदार में झोल है तो मेरे फैसलों में भी झोल होगा. अगर मेरा किरदार कमजोर है तो मेरे फैसले भी कमजोर होंगे. तो क्या मेरा मुस्तकबिल मजबूत होगा? मेरा मुस्तकबिल भी कमजोर होगा. ये मुस्तकबिल बनाने वाली चीज एकेडमिक्स तब है जब किरदार है. अगर किरदार नहीं है तो आपका मुस्तकबिल दुनियावी तौर पर शायद पैसे की हद तक तो बन जाए, लेकिन वो एक कॉम्प्रिहेंसिव सक्सेस नहीं है, वो एक बड़ी कामयाबी नहीं है. एक ऑर्डिनरी कामयाबी है, आपके पास 10-12 करोड़ 50 करोड़ रुपए आ गए एंड दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट. You will remain ordinary. So all those who wish to have a life of an extraordinary success, all those who do not want to settle at ordinary, वो अवाम नहीं बनना चाहते. अगर आप में से कोई ऐसे लोग हैं कि जो अवाम के मुकाम से बुलंद होना चाहते हैं, तो उसके लिए बुनियादी शर्त है किरदार साजी, कैरेक्टर डेवलपमेंट. दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. यू मे नॉट बी गुड एट एकेडमिक्स. आप हो सकता है एकेडमिक्स में अच्छे ना हो. अगर अच्छे हो तो इट्स अ प्लस थिंग. बट इफ यू आर नॉट गुड एट एकेडमिक्स, you still have a chance. You still have a chance to lead. So don't let yourself be down by the people telling you कि तुम तो नालायक हो. नालायक नहीं है. नालायक लायक कुछ भी नहीं है. The only thing that is going to make your life is your character. So if you have a strong character, अच्छा, एक और अच्छी बात यह है कि जब आपका किरदार तश्कील पाता है, when your character develops, when you grow positively in your character traits, your other areas of your life also start growing. इसकी मिसाल यूं है, एक शख्स है, उसके सर में दर्द है. एक स्टूडेंट है मेरा, उसके सर में दर्द है. अगर मैं उसको किताब पढ़ने को दे दूं तो क्या वो उस सर दर्द के साथ उस किताब का मुताला अच्छी तरह कर सकेगा? जाहिर है उसके सर में दर्द है, उसको प्रॉब्लम है, तो वो किताब का मुताला अच्छी तरह नहीं कर सकेगा. लेकिन एक और शागिर्द है कि जिसके सर में दर्द नहीं है, और अगर मैं उसको किताब दे दूं तो वो जाहिर है उसका मुताला बेहतर तौर पर कर सकेगा. सो दिस हेडेक इज लाइक कैरेक्टर ट्रेट. इसकी एग्जाम्पल देने की बात यह है कि ये सर का दर्द जो है, ये वो किरदार की कमज़ोरी या मजबूती को अगर आप समझें
तो जो मजबूत किरदार के बन जाते हैं उनकी एकेडमिक्स भी खुद ही ठीक हो जाती हैं, दे डोंट हैव टू डू मच। जिनके कैरेक्टर स्ट्रांग हो जाते हैं उनकी एकेडमिक्स ठीक हो जाती है, उनकी बाकी एरियाज ऑफ लाइफ ऑल्सो दे स्टार्ट इंप्रूविंग। वाई? एज आई टोल्ड यू, if you are a weak character, you will make weak decisions, and weak decisions will give you a weak future. But if you're a strong character, you will make strong decisions, and the strong decisions will take you into a strong future. Now, coming to the first aspect of, we have talked about this already in another class. The first aspect of a character development is respect. We talked about it, respect and respectability. adab nahi, adab aur adab dono. Respect is something that you carry within yourself. It does not pop up suddenly. You carry, you have to know what is respect. And the first and foremost important thing is respecting your own self. आपके नजदीक एक बुरा शख्स क्या क्या काम करता है? जी, आपके नजदीक एक बुरा शख्स क्या करता है? उसके क्या क्या काम होते हैं? झूठ बोलता है, ओके, he tells lies, he or she, whatever. पीठ पीछे बातें करता है, ओके. They degrade people, okay. They are bullies, okay. They don't accept their own mistake, okay. They think that they are superior to others, okay. They argue a lot, okay. They don't respect others, okay, agreed. They spread their negativity into others, okay. They are harsh, okay, they are harsh, they have harshness in themselves, okay. Now these are all those things. So you were saying they lie, they cheat, they are harsh, they are stubborn, they are proud, they are negative, they are bullies. The respect, if you have respect for your own self, you will not be like this. Got it? If you respect your own self, then don't be a liar. So if you want to respect others, before respecting others, you got to respect your own self. Learn to respect yourself. How can you respect yourself when you are a liar? When you know that I am a liar, how can I respect myself? I cannot even respect my own self if I am a liar, if I am a cheat, if I am a deceiver, if I am a bully, if I am a harsh person, if I am a negative person, if I am a person who hurts others. How can I have respect for my own self? So what is respecting own self? Respecting own self is, first thing is, forgive yourself. Forgive all the mistakes you have done until today. Tell yourself कि चल यार, आज तक तूने जो कुछ किया दूसरों के साथ, तुझे माफ किया, आज के बाद अच्छा बंदा बन जा. I should not be telling you this. You should be telling yourself, if you respect yourself. No? It is simple. How can you respect others when you don't respect your own self? You can't, you will not be honest. You will, obvious बात है ना, ये तो झूठ नहीं है कि मैं खुद तो चोर हूं लेकिन दूसरों को कहता हूं यार ईमानदारी किया करो यार. खुद तो धोखेबाज हूं लेकिन दूसरों से एक्सपेक्ट करता हूं कोई मुझे धोखा ना दे.
खुद तो बदतमीज हूं, जाहिल हूं, दूसरों को कहता हूं यार बदतमीजी मत किया करो यार. Isn't so? So the basic requirement of respecting yourself is to be honest with your own self. So that is the respect that you should have for your own self. छोड़े दूसरों की रिस्पेक्ट को, पहले अपनी रिस्पेक्ट तो कर लें, अपने आप को तो रिस्पेक्ट करें. और वो कैसे स्टार्ट होगी? हाउ विल दैट स्टार्ट? Forgive yourself. Forgiving is don't beat yourself down. You have done what you have done. जो आपसे गलतियां हो गई, कोई बात नहीं, जाने दें उनको. उस अपने आप से कहें कि यार चल तू अल्लाह से माफ़ी मांग ले, और 2 रकात नफल पढ़ के अल्लाह मियाँ से माफ़ी मांग ले. अल्लाह से कहें या अल्लाह जो बुराइयां मैं कर चुका मुझे तौफीक दे, मैं आइंदा ना करूं. ठीक. एंड रिस्पेक्ट, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ, स्टार्ट टीचिंग योरसेल्फ, बिकॉज व्हेन यू विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ तो आपके अंदर से एक आवाज आएगी, वो आपको कहेगा हुण बड़ा हाजी बन रहे हैं, पहले तो तू इन गालां कढ़दा हुंदा सी. राइट. सो आपका अपना आप, इट विल पुल यू डाउन. डोंट बी पुल्ड डाउन बाय योर ओन सेल्फ, बट रिस्पेक्ट योरसेल्फ. एग्जैक्टली जैसे आप किसी की रिस्पेक्ट करना चाहते हैं उसी तरह अपनी रिस्पेक्ट करें. अपनी इस्लाह पहले है. अव्वल खैश बाद दरवेश. फर्स्ट मी एंड देन द अदर्स. वी विल कंटिन्यू दिस बिकॉज द टाइम इज ऑलवेज शॉर्ट. फॉर दिस यू विल हैव टू फाइंड आउट. आपको पता करना पड़ेगा ना कि मैं भी तो गलत हूं कि नहीं. पहले अपने आप को गलत पाएंगे तो अपने आप को माफ करेंगे ना. जब आप कहते ये हैं कि मैं तो हूं ही ठीक, मैंने तो कुछ गलत ही नहीं किया, मैंने तो गाली इसलिए दी कि उसने मुझे गाली दी थी, तो अगर आप अपने आप को एक्सक्यूजेस देते रहते हैं तो देन यू विल नेवर फाइंड योर ओन मिस्टेक्स. भाई उसने तो गाली दी थी, उसकी गलती है बेशक, लेकिन क्या मुझे गाली का जवाब गाली से ही देना चाहिए? दैट्स माई क्वेश्चन. और अगर ऐसा नहीं है, व्हाट इज अ बेटर थिंग टू डू? तो लेकिन मैंने तो गाली दे दी, तो दैट इज माई मिस्टेक और नॉट? तो आई हैव, यानी ये किसी दूसरे ने आपको नहीं बताना, दूसरे तो आपको बता के थके हैं. उसकी वजह यही है कि आप डिफेंसिव हैं हर वक्त, ऑल द टाइम. जैसे पेरेंट्स कहते हैं और तुसी फलाना काम नहीं कर दे, नहीं वो उसकी वजह ये थी, तुम ये नहीं करते, उसकी वजह ये थी. हर चीज़ की वजह लॉजिक्स. डिफेंडिंग योर सेल्फ ऑल द टाइम्स. स्टॉप डिफेंडिंग योर सेल्फ, फाइंड योर फॉल्ट्स योर सेल्फ. दूसरा मुझे कोई क्यों बताए कि मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं, मैं खुद अपनी बुराइयों को क्यों नहीं देखता? मुझे क्या डर लगता है? क्या ये अच्छी बात नहीं है कि मैं अपनी बुराइयों को खुद देख लूं और उनको ठीक कर लूं? या चलो अगर ठीक नहीं भी होती तो देख तो लूं, ऑनेस्ट तो हो जाऊं. एंड देन वन कैन फॉरगिव हिमसेल्फ, एंड देन वन कैन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ चेंज. ओके. What if we repeat our mistakes? It's all right. That's what forgiveness is all about. Right? Learn to forgive, but forgiveness should not be foolishness. Forgiveness means that don't do it and try again. Try not to do it, honestly. Until a time comes that you are able, for example, if I ask you to lift 200 kilograms today, can you do that? No, you can't. You may not be able to lift 200 kg weight. But if I keep asking you every day, and you also keep training yourself every day, the possibility is that after 6 months you may be able to lift it. Got it? So you see, but when you don't forgive yourself, you don't give yourself another chance. You never learn. You're never able to pick those 200 kilograms. You never tried. You never did anything. You're just a failure.